Hello friends, you are watching Yashi TV with Mommy. In this video, we will make a delicious dessert which is mango sabudana kheer. So friends, mango का season जाने से पहले try this recipe at least once. Let's get started with the first step. For this we need sabudana. Here I am using 3/4 cup of sabudana. Add some water and soak it overnight. After 12 hours, it will look like this. अभी एक मैंगो को अच्छे से साफ करके उसे पील कर लेंगे. Put it into a mixer jar and make a smooth paste. अभी एक और मैंगो लेंगे और उसके छोटे छोटे पीसेस काट के रख लेंगे. Pour half liter of milk into a saucepan. आप कोई सा भी मिल्क यूज कर सकते हैं. मेरे पास टेट्रा पैक है तो मैं अभी वो यूज कर रही हूँ. Now add sabudana into this. अगर आप रॉ मिल्क यूज कर रहे हैं तो पहले मिल्क को बॉईल करें और फिर साबुदाना ऐड करें. Keep stirring until it will start boiling. Here I am using 3 to 4 elaichis for flavoring. Crush it. अभी साबुदाना थोड़ा थोड़ा कुक होना शुरू हो गया है. So keep stirring. It is boiling now. Now I am adding 2 tablespoons of condensed milk. I am using brown sugar. You can use white sugar or sugar free, anything as you want. Mix it, mix it, mix it well. Turn off the flames. It is ready now. Now it is time to add lots of mangoes. और मैंगोस तभी ऐड करने हैं जब ये मिक्सचर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो. Add इलायची पाउडर. Mix mango puree and mango chunks as well. So guys, enjoy this delicacy in this monsoon season. Thanks for watching.